Now today we discuss the Laplace transformation of derivative. What is the Laplace transformation of derivative? According to the Laplace transformation of derivative, let ft be a continuous, piecewise continuous function where t is greater than 0 and f dash t be the piecewise continuous. Means ft is also a continuous function and f dash t is a piecewise continuous function for every finite interval with the range t is greater than 0 and ft be the exponential order. Ft be the exponential order so that there exists a constant m, t and alpha such that the condition of exponential order is ft less than equal to m e raised to the power alpha t for all t is greater than capital T. Then f dash t is exist, then we can find the Laplace transformation of f dash t, and the Laplace transformation of f dash t is s into Laplace transformation of ft minus f0. This is s. And similarly we can find the f double dash, f triple dash. So we go for what is the Laplace transformation of f double dash t, and is equal to s square Laplace transformation of ft minus s f0 minus f dash 0, and f triple dash then we can say this is s cube, f double dash then s square, start with s cube, and f dash t then 1 less s cube then s square then s raised to the power 0 means 1, and go for f0 f dash 0 f double dash 0. Similarly the Laplace transformation of f and t is s raised to the power n Laplace transformation of ft minus s raised to the power n minus 1 f0 minus next term s n minus 2 f dash 0 next f double dash 0. Similarly go for on and last f n minus 1 into 0. This is less than 1 is fn and this is fn minus 1 less than 1. So that is the formula we have to use the Laplace transformation of f derivative. Using the Laplace transformation of derivative we have find the some example. So we take an example how to find the cos at Laplace transformation of cos at. So how to find cos at Laplace transformation. So Laplace transformation of the derivative. So first of all we have to take what is ft. Ft is cos at. And what is the differentiation of f dash t? F dash t is cos ka differentiation a cos ka sin x, cos x ka minus sin x means sin at, and f double dash the differentiation again differentiation sin at ka minus a square sin ka cos at. So we use the Laplace transformation of f double dash t is equal to s square Laplace transformation of ft minus s f0 minus f dash 0. So we put these result in that formula and we get Laplace transformation of f double dash t is minus a square cos at, s square Laplace transformation of ft is cos at minus s f0. f0 means cos 0. Cos 0 is 1. So next time cos 0 is 1 and f dash 0. F dash 0. So f dash is minus a sin t. So minus a sin t replace t by 0. So f dash 0. So sin 0 is 0. So 0 का multiply a में करेंगे then we can find the 0. So that is what is the Laplace transformation of a square by the linearity property. A square is a constant quantity, so we is common, and Laplace transformation cos of at s square cos at minus cos 0 is 1 and this is 0. Now this is cos at and transfer this term minus then cos at here plus and minus s is transferred to here. This is plus. Take common cos at Laplace of cos at and here s square plus a square. So Laplace transformation of cos at is equal to s upon s square plus a square, and that is the formula to. We know that the Laplace transformation of cos at is s upon s square plus a square, and it is proved. So we have to find the Laplace transformation of any derivative of
the Laplace transformation. We have to find the Laplace transformation of any derivative. Similarly, go for the another example, t sin at, and we have to find. So here, what is, we have assume that this is ft. Ft is t sin t. What is the differentiation? At first second function, first function sh, differentiation of second cos sin at का cos at a, and sin at t का differentiation 1, and again differentiation. So a square cos का minus के sin at, and sin at का differentiation at cos at, and we substitute this value in double derivative function f double dash at. So f double dash at is equal to s square Laplace transform. So Laplace transformation of t sin t we have to understand, and f double dash t is equal to minus a square, differentiation of that, a square t sin at plus 2 cos at, and we have to substitute this value in this formula. Laplace transformation of f double dash at is equal to s square Laplace transformation of ft minus s f0 minus f dash 0. So we substitute f double dash at. F double dash at is a square t sin at plus 2 cos at, and we substitute here. Similarly, ft is t sin at, and f0 is substitute t sin 0, t is 0, and f dash 0 is a 0 cos 0 plus sin 0, and after substitution sin 0 is 0 and cos 0 is 1, and 0 का multiply करेंगे, then this is also 0. So we get find by the linearity property a square minus common Laplace of t sin at plus 2a Laplace of cos at is equal to s square Laplace of t sin at, this one, and another terms are 0. After transfer of this term, because t sin at and t sin at goes to this side minus, and this goes to plus, and this is 2a Laplace transformation of cos at, and what is the Laplace transformation of cos at is s upon s square plus a square, and here something is common, and what? Laplace transformation of t sin at, and Laplace transformation sin at divided by this, and we get 2as upon s square plus a square whole square, and this is called fs, and this is the answer, and we can say that Laplace transformation of t sin at is equal to this. So we have to find this Laplace transformation by the help of derivative. Similarly, we go for the another result of Laplace transformations. Some another examples of the derivative of Laplace transformation. So we take the another example, Laplace transformation of 2 under root t upon pi equal to this. If it is given, then so that Laplace transformation of 1 upon root pi t is equal to 1 upon root s. We have to understand that this is ft, suppose, and we have to solution. Ft is this, and we have seen that this is the differentiation of that function is that. We have to check differentiation of that function, that means 2 under root t upon pi is 1 upon under root pi t. Check. So here ft is under root t upon pi, and differentiation, what is the differentiation of root x? 1 upon 2 root x, and again this differentiation. So according to the formula, t ka differentiation 1 upon root pi. After calculation, we have to get pi is upside and pi se pi cancel, then this is root pi, and multiplication, then we get f dash t is equal to this. So we have seen that this is the differentiation of that function. So we use the Laplace transformation of derivative. So Laplace transformation of f dash t is equal to s Laplace transformation of ft minus f0. So f dash t is this, and we substitute this value, and Laplace transformation of ft is equal to this is the Laplace transformation of ft. So ft is
2 under root this upon this, so ft is this, so this is the Laplace transformation, and f0 is substitute 0, t is equal to 0, then according to the given condition this is equal to 1 upon s raised to the power 3 by 2, so this is 1 upon s raised to the power 3 by 2 and this is 0, okay, and this is s, so goes to upside and we can write s raised to the power minus 3 by 2 multiplication addition 1, this is power 1, and after calculation we get s raised to the power minus 1 by 2 and we can write 1 upon root s, and we check कि Laplace transformation 1 upon root pi t is equal to 1 upon root s. This is the result and hence proved. Similarly, we go for the another result. Find the Laplace transformation by using derivative if the given condition x0 is 0 and x dash 0 is 1, and we have to find the Laplace transformation x double dash minus plus 2x dash minus 3x. How to calculate? So we know that, so we assume Laplace transformation of xt is xs. Suppose, so Laplace transformation of x double dash plus 2x dash minus 3x equal to, by the linearity property, Laplace transformation separate x double dash separate 2 Laplace transformation of x dash minus 3 Laplace transformation of x, and Laplace transformation of xt is just like xs, so we can write this is, and here we apply the formula of Laplace double derivative. So by the definition of s square xs minus s x0 minus x dash 0, similarly plus 2 x s minus x0 minus 3 s, because s xs, this is xs, because Laplace transformation of ft is xs, this is s. So we substitute this value x0 is 0, x0 is 0 and x dash 0 is 1, so substitute x0 is 0, so this, that term is 0 and that term is 1, similarly 2 and this, and x0 is 0, so that is 0, and here 3xs common, xs, and this is s square plus 2s minus 3 xs is common, minus 1, that is this, and that is the result. So we take the some another theorems on Laplace transformation, initial and final value theorem. What is initial value theorem? In the initial value theorem says that let f be a continuous function and f dash be a piecewise continuous function. f कोई continuous function होना चाहिए और f dash कोई piecewise continuous function होना चाहिए 0 to t within t, and for every finite t let f and f dash be the exponential order. दोनों ही किस ऑर्डर में होने चाहिए? f और f dash एक्सपोनेंशियल ऑर्डर में, जो आपको हम पहले डिफाइन कर चुके हैं फॉर्मूला, एंड t टेंडिंग टू इनफाइनाइट देन, और उस समय हमें लिमिट t टेंडिंग टू इनफाइनाइट, देन वी कैन से कि लिमिट s टेंडिंग टू इनफाइनाइट एस एफ एस की वैल्यू किसके इक्वल होती है? लिमिट t टेंडिंग टू 0 एफ टी, और वी कैन से कि दिस इज f0 मीन्स दिस इज द इनिशियल वैल्यू ऑफ द थ्योरम ऑफ द फंक्शन, मीन्स एफ टी कोई फंक्शन है तो उसकी इनिशियल वैल्यू लिमिट t टेंडिंग टू 0 पुट करके सब्स्टिट्यूट करके निकाली जा सकती है, या लिमिट s टेंडिंग टू इनफाइनाइट एस एफ एस के द्वारा निकाली जा सकती है. सो इसके ऊपर अपन एक एग्जांपल देखते हैं. एफ टी इज इक्वल टू टी स्क्वायर, सपोज एक एफ टी इज इक्वल टू टी स्क्वायर एक फंक्शन है, इसका डिफरेंशिएशन एफ डैश टी, दिस इज 2t, एंड Laplace transformation of ft is equal to, so we take the Laplace, and according to the formula of Laplace we can write gamma n plus 1 upon 3 s raised to the power n plus 1, so this is 2 plus 1 3, and this is gamma 3 value calculate, we can write this is factorial 2 and factorial 2 value is 2, and this is s cube, so we can write this is fs. According to the initial value formula, limit s tending to infinite sfs. So s here put and fs is 2 upon s cube. Now cancel sum and we get this is s square, and putting limit s tending to infinite, then 2 upon infinite is goes to 0. So we can find this value is 0, and we have to check the limit t tending to 0 ft. So what is ft tending to 0 ft, and ft function is t square, ft function is t square,
and we substitute t is 0, then 0 square is 0, so we can write this is 0. So it is clear कि that result and that result both are same, दोनों ही result same है, इसलिए इसको हम क्या कह सकते हैं, इनिशियल वैल्यू थ्योरम. मीन्स किसी भी लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन या फंक्शन की इनिशियल वैल्यू कैसे निकाली जा सकती है, वो इस फॉर्मूले के द्वारा हम निकाल सकते हैं बाय द यूजिंग लाप्लास. एंड सिंपल, वी हैव टू फाइंड द फाइनल वैल्यू ऑफ द थ्योरम. अब हमें किसी फंक्शन की फाइनल वैल्यू निकालनी है, उससे पहले फंक्शन क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए, उसका डेरिवेटिव पीस वाइज कंटिन्यूअस होना चाहिए विद द इंटरवल 0 to t to upper capital T, where capital T is the every finite interval, and f be a exponential order and t tending to infinite as t tending to, then if limit t tending to infinite ft की वैल्यू मीन्स फाइनल वैल्यू उसकी वही होगी जो लिमिट s टेंडिंग टू 0 sfs की वैल्यू होगी. कैसे, हम एक एग्जांपल के थ्रू चेक करते हैं. ft is equal to 3 e raised to the power 2t. Now we have to take, this is Laplace transformation of, by the, we know that Laplace transformation of ft is fs. So we take to find Laplace transformation निकालेंगे 3 into e raised to the power 2t, and according to the formula 3 is constant, e raised to the power a का 1 upon s minus a, and minus is minus 2, so we get minus plus, so we find 3s upon s plus 2. हमें क्या मिला, 3s upon s plus 2, और इसको अपन क्या कह सकते हैं, fs. अब जब ये fs है तो अब हमें चेक करना पड़ेगा s fs when we substitute limit s टेंडिंग टू 0. तो अब हमें s की लिमिट 0 की ओर टेंड करनी पड़ेगी. तब हमने इसे कैलकुलेट करेंगे, s की वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे, दिस इज 0, 3 अपॉन 0 plus 2, and 0 plus 2 is also, and multiplication of any number 0, so we can write 0, and that result is 0. So it is clear कि this is 0, and when we substitute t tending to infinite ft, इसमें e की पावर इनफाइनाइट की वैल्यू माइनस इनफाइनाइट की वैल्यू 0 होती है, तो both result are same, so we have to find the result in the same way and find the final value of the theorem. Now we go for the another theorem of Laplace transformation of integral. How to find the Laplace transformation of integral? So we go for the some theorem. Suppose Laplace transformation of ft fs की इक्वल है, और if ft कोई पीस वाइज कंटिन्यूअस फंक्शन है इन द फाइनाइट इंटरवल, वही 0 to t with the range t is greater than 0, इन द एक्सपोनेंशियल ऑर्डर होना चाहिए, और उसकी कंडीशन क्या है एक्सपोनेंशियल ऑर्डर की, कि ft modulus of ft is less than m e raised to the power alpha t, alpha is any scalar quantity, and s is greater than alpha. For all t is greater than 0, then Laplace transformation उसका क्या होगा, Laplace transformation देखो इंटीग्रल का है, इंटीग्रल 0 to t fu du is equal to fs upon s, and this is the most important formula to find the Laplace transformation of integral any. So we use the formula, we take some example. We go for the first example, Laplace transformation of 0 to t sine hyperbolic 3t dt. Now how to calculate? Here we see that the ft function is sine hyperbolic 3t. So here ft is sine hyperbolic 3t. What is the Laplace? Laplace of ft sine hyperbolic 3t, a upon s square minus a square. So a is here 3. So 3 square is 9. So that function is fs. That function is fs. And according to the Laplace transformation of integral formula, this is fs upon s. So this is fs upon s. So upon s means divided by s. So that is the result. Now we verify कि this result is true or not. So we verification. So Laplace transformation of 0 to t sine hyperbolic 3t. First of all, we have to integrate this function. So what is the integration of sine hyperbolic 3t? Integration is cos hyperbolic 3t upon 3. Putting limit, upper limit minus lower limit, substitute limit, upper limit t and lower limit 0. Cos hyperbolic 0 is 1. Now we go for the Laplace transformation. Laplace transformation of cos hyperbolic 3t. Cos hyperbolic 3t, or that value is minus 1. So cos hyperbolic 3t का Laplace s upon
s square minus a square. A is 3, so 3 square is 9. And this is Laplace transformation of 1. 1 का Laplace 1 upon s. So take LCM, and after we get the result 3 upon s into s square minus 9, and that result is same to 3s upon s. Then both this formula is very important. Now we take the another example, and the result is Laplace of double integral. देखिए, this is the integral first time 0 to t, and again integral 0 to t fu du square means 2 time integral, and the integral after integral, the result is fs upon s square. How to find this result? So we know that by the Laplace transformation of integral, first we take du square, so separate du and du, and we take the integral first time, and after the formula, this is fs upon s, so that result is fs upon s, या Laplace transformation of ft upon s. And now again, so this is again fs upon s, and again this function we can write, so we can write this is function is ft, so ft upon s and 1 by s. ये कहाँ से है? According to the formula, first 1 upon s fs upon s, so this is just like fs, and again 1 upon s, again integral 1 upon s fs upon s. Fs means integral Laplace of ft, so this is fs, and s and s square. Now we go for Laplace transformation of the following. So we find the Laplace transformation within limit 0 to t e raised to the power minus t cos t dt. How to solve this integral? Because the integral form, according to the formula 1 upon s Laplace transformation of ft, Laplace transformation of ft means e raised to the power minus t, and this. Here we know that हम जानते हैं कि इसका लाप्लास नहीं निकालना आता e की पावर माइनस टी, तो इसमें हमें अप्लाई करना पड़ेगा फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम, क्योंकि हमें मालूम है किसका लाप्लास, कॉस टी का. सो लाप्लास ऑफ कॉस टी, एंड वी यूज e रेज़ टू द पावर माइनस टी बाई फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम. वी कैन राइट s प्लस ए, रिप्लेस s बाई s प्लस ए. लाप्लास ऑफ कॉस टी क्या होता है? s अपॉन s स्क्वायर प्लस ए, एंड दिस इज द फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम, एंड सब्स्टिट्यूट दिस, इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे s की जगह s प्लस 1 and s plus 1. Calculation, after calculation we get the result. So we have to find the result on the same way. So lot of examples are here. Now we go for the next result, multiplication of t raised to the power n and division by t. There are the two theorems. First we go for the multiplication of t raised to the power n when n is positive integer. Then the theorem says the Laplace transformation of ft if fs के इक्वल है, then Laplace transformation of t raised to the power n ft की वैल्यू किसके इक्वल होगी? माइनस 1 raised to the power n. जितना यहाँ पर n है t की, उतना माइनस raised to the power n, एंड सेम टाइम डिफरेंशिएशन dn over dsn fs, और इसका n टाइम डिफरेंशिएशन करेंगे fs का, तो हमें मिलेगा लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टी रेज़ टू द पावर एन एफ एस. एंड इसका प्रूफ मैथमेटिकल इंडक्शन प्रिंसिपल के थ्रू सॉल्व किया जा सकता है. हम अब एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं कि व्हाट इज द, टेक सम एग्जांपल ऑन दैट रिजल्ट. तो हाउ टू सॉल्व, फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन. तो हियर फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन. फर्स्ट एग्जांपल टी स्क्वायर साइन ए टी. अब हमें इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आता बिकॉज साइन ए टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन अपने को आता है, लेकिन टी स्क्वायर मल्टीप्लाई में है. वैसे ही हम समझ गए दिस इज द लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मल्टीप्लीकेशन टी रेज़ टू द पावर एन अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला माइनस 1 रेज़ टू द पावर एन. एन इज हियर 2, दैट्स वाई यहाँ पर 2, एंड डिफरेंशिएशन भी 2 बार है. किसका डिफरेंशिएशन है? लाप्लास ऑफ साइन ए टी का. साइन ए टी का लाप्लास ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे 2 टाइम्स. तो फर्स्ट टाइम कैसे? 1 अपॉन ए का माइनस 1 अपॉन ए स्क्वायर, एक्स 1 अपॉन एक्स का माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, एंड अगेन एस स्क्वायर का 2s और ए स्क्वायर का 0.
नाउ दिस इज द फंक्शन ऑफ 2as अपॉन दिस. नाउ नोमिनेटर डिनोमिनेटर अप्लाई करेंगे. क्या होता है, डिनोमिनेटर इंटू नोमिनेटर का डिफरेंशिएशन माइनस नोमिनेटर इंटू डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर. और आफ्टर कैलकुलेशन वी गेट द रिजल्ट 2a 3s स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन दिस. तो इस तरीके से अपन किसी भी फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालते हैं जिनमें t की पावर n का मल्टीप्लाई हो रहा हो. इसी के बेस पर एक और एग्जांपल यहां पर है. देखो ये t स्क्वायर का है. तो सेम वे वी हैव टू अप्लाई द रिजल्ट और एंड फाइंड द रिजल्ट. नाउ वी गो फॉर द डिवीजन मेथड ऑफ द लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन. डिवीजन बाय t. In the division method, Laplace transformation of ft is equal to fs, then Laplace transformation of ft upon t is equal to within limit 0 to infinite fs ds, and that is the formula. यदि कोई Laplace transformation ft fs मालूम है और हमें ft upon t मीन्स यहाँ t से डिवाइड हो रहा है तो उसका एक बार इंटीग्रल करेंगे. कितनी बार इंटीग्रल करेंगे? वन टाइम विद इन लिमिट 0 टू इनफाइनाइट fs ds. तो कैसे करेंगे इसके बेस पर अपन एक एग्जांपल लेके चलते हैं. तो देखिए अपन एक एग्जांपल. ये लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालना है e रेज़ टू दी पावर माइनस ए टी माइनस ई रेज़ टू दी पावर माइनस बी टी अपॉन टी. यहाँ देखिए अपॉन में टी है. समझ गया. हम डिवीजन बाय टी मेथड अप्लाई करना है. तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन किसका निकालेंगे? एफ टी का. तो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ टी मीन्स e रेज़ टू दी पावर माइनस ए टी माइनस ई रेज़ टू दी पावर माइनस बी टी डी एस. एंड दिस इज द फॉर्मूला ऑफ लाप्लास विद इन इंटीग्रल 0 टू इनफाइनाइट डी एस. एंड लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन इसका क्या होगा? e रेज़ टू दी पावर ए टी का 1 अपॉन एस प्लस ए, बी टी का एस प्लस बी. अब इसका अपने को क्या करना है? इंटीग्रेशन. तो इंटीग्रल क्या होता है? डी एस के रेस्पेक्टिव में. तो 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रल क्या होता है? साइन एक्स डी एक्स. तो उसी तरीके से 1 अपॉन एस प्लस ए का लॉग 1 अपॉन एक्स का क्या होता है? लॉग एक्स. तो इसी तरीके से 1 अपॉन एक्स का हो गया लॉग एस प्लस ए, एंड दिस इज 1 अपॉन एस प्लस बी का लॉग एस प्लस बी, एंड विद इन लिमिट एस टू इनफाइनाइट. एंड द लिमिट इज एस टू इनफाइनाइट. एस टू इनफाइनाइट. So after integral, the limit is s to infinite. Here s to infinite. So log m minus n, log m upon n, and infinite को substitute करेंगे तो this is infinite upon infinite. और s कॉमन ले लेंगे तो this is 1, and log 1 की log 1 minus in s put करेंगे, and that result goes to 0. Log 1 is 0, so that's why this is 0, and this we get the result. So this is the example on Laplace transformation of this.